Hello everyone, this is Muskan Valvani, your educator, trainer, speaker, blogger and owning Educreate where talent meets excellence. So today Educreate presents 18th talk show on the topic Early Years are Important in Education. For this we have invited our special guest Miss Neelima Gupta ma'am. She is an executive principal of Helen Grady International. She is an author, storyteller, power parenting coach, career counselor and guide, and fellow research associate World SCAP. She has certified in guidance and counseling by CRACSLAB, that is Center for Research in Applied Cognitive Science. Also certified as CONAT mentor, cognitive and natural ability assessment. She is a member of managing committee at Sarda Ramakrishna Mission. She is board of studies at Sarda Ramakrishna Vidya Mandir, Indore. Books and Beyond, encouraging children to develop reading habits through stories and other activities. Now, education and professional training. She is a postgraduate in chemistry and have done a certificate course in management and entrepreneurship from ISB, that is Indian School of Business, Hyderabad. She has learned art of storytelling from a renowned international storyteller from UK, Miss Kusumika Chatterjee. She has attended a workshop on speech techniques by Miss Julia Tanner, Hong Kong. She has trained on theatre techniques by Miss Alison Mozantic, UK, Mr. Ellen Monatero, Malta, and Union Rice, South Africa, and on Kindy drama by Miss Emma Loftus, UK. She has conducted workshops and webinars, workshops on storytelling techniques, drama in classrooms, making teaching and learning a joyful experience for the teachers of Sri Satya Sai Vidya Vihar, Indore, Sage International School, Bhopal, and IPS, Bhopal. A webinar by ECCE India on creative activities for children and parents. Corporate storytelling for the senior manager, ISIL Tractor. A webinar on how to make teaching and learning interesting for the students of B.Ed College, that is Tagore Mahavidyalaya. Expert talk on Dramatize Your Class and the Magic Happens, organized by ECA, that is Early Childhood Association. Unlock Your Child's Mental Abilities and Natural Strengths, organized by DPS Indore. Eliminate guesswork and choose your career wisely for the students of Sri Satya Sai Vidya Vihar. Storytelling workshops and sessions for the teachers and parents of Poddar International School. Virtual even for Poddar schools across the country. Literature Festival. She has organized Children's Literature Festival under the banner of Indore Literature Festival in 2017. Moderated talk shows for children under Indore Literature Festival with Prayaj Shukla, Tarek Fateh, Taslima Nasreen, Lakshmi Narayan Tripathi. So this is all about our today's guest. Now I would like to request Neelima ma'am to share her views on the topic. Over to you, ma'am. Thank you so much, Muskan, and Educreate to invite me here and to ask me to throw some light on my favorite topic and the favorite age group. Why I say favorite age group, which is early years, that is we say early childhood care and education that emphasizes on children up to 7 years of age. So that's very important for a simple reason, because when the child is young, when it is when the child is exploring everything because of the young age, his mind is open, right? So he has the maximum number of neurons and the brain is most active. Now usually the parents think that abhi to bahut chota hai, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी बढ़ेगा तब सीखेगा, या तब उसको हम ये सिखाएंगे, या तब हम उसको ये एक्सपोजर देंगे. But let me tell you that these are the most crucial years. जैसे किसी मकान को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है फाउंडेशन. फाउंडेशन बनाते समय आप कुछ भी चेंज कर सकते हो. ये कमरा इतना बड़ा चाहिए, ये किचन इधर चाहिए, या ये स्टेयरकेस यहाँ से जाएगा. You can change everything. The same as the child, the early years when we talk about
when the child is up to 7 years of age. That is, we in the cognitive development, we call it the first stage of cognitive development. We can make anything out of the child. We can make him dynamic. We can make him the sportsman. We can make him the author, the artist. Anything we can make out of him, because his brain is open, very active, and at this age we are so protective. Being protective is excellent. It's great, because the human child doesn't get independent very quickly like other animals. So we need to be protective. But in the process of being protected, we should not forget that we have to make him productive too. So be productive and be protective too. So expose him to the things. There's a theory called use it or lose it. When the brain is active, the neurons are active. So whatever we are using, it is in use. It stays, and what we are not using, the brain discards it. So don't worry, the brain will automatically discard the useless neurons, but you must keep on exposing the child to the activities so that we use it and we make maximum use of it, and the child learns and becomes dynamic when he grows. Great, ma'am. Can you please highlight us about ECCE and Helen Grady? Okay, so these are two different organizations altogether, and both of them contribute a lot in the child's development, I would say. Early Childhood Care and Education is an organization, and at times, I'm associated with the people, the representatives, and do storytelling, drama activities for them quite often. And Helen Grady is a speech and drama academy. It's an international organization, and it works for the development. We use drama as the medium to improve personality, to work on the personality. And जब हम बात करते हैं personality की, तो the speech, the expression, the body language, these three are very important components. So theater के through, drama के through, that we call developmental drama, हम ये तीनों aspects को improve करने की कोशिश करते हैं. So doing them, developing them separately, and then putting them together becomes a vibrant and a dynamic personality. Again, in early years, अगर बच्चे drama से expose होते हैं, so they learn, they develop all these skills as a part of their personality. It doesn't come as something, alien to them, and then they have to work on it. It happens when they grow. It doesn't come to them naturally in the later years. They have to put efforts. जबकि इस एज में, up to 7 years, early years में, this goes effortless. The children so naturally imbibe these emotions, these expressions, the body language, and it becomes a part and parcel of their personality. So that's the importance of having drama, and any skill, introducing them in the early years becomes important. Okay, so ma'am, I'm starting with the questions. First is, please tell us about the speech techniques and theater techniques. Oh, yes. So, since I've been into developmental drama, that is the, use of drama in education for last 15 years now. So, these techniques actually are the important part of every person. So, all of us should do drama. अगर आप ऐसे देखो तो हम सब as an individual we do drama, isn't it? We tell stories in our normal life as well. So this is the important aspect, and just feel, if you're trained on that, if you're trained on how to speak well, that is the speech techniques that you say. And if we as a whole, if we talk about theater techniques, it's that only: how to use your body, how to use your emotions, how to master your speech skills. So what is speech? Like the control over breath, projecting your voice, using all these techniques, and working on them, and then using them to express yourself. That's what we do in our normal life. So when I say using speech techniques, using theater techniques in the real life, we all do drama, we all are artists. The only thing is that a little spark will add on to everybody's personality. So that's the purpose of teaching theater or bringing drama in education. So that works for everyone equally. Okay, well, ma'am, second question is, what is corporate storytelling?
Okay, so as I just told you, drama is in everybody's life, isn't it? Like we all do drama, we all tell stories. And what is the corporate structure? You have HR, you have marketing, you have sales, very important department. You have administration. So what they do throughout the day, in their organizations, what they do, we all enact, we all tell. If I have to sell something to the customer, what I do, I tell a story. If I'm aware of it, see, unconsciously we are telling the story. Without being trained, we are telling the story. So what if that becomes the part of, your pitch, your script, that yes, if I have to tell a story, I have to understand that person, whether this person needs it or not. So, generating a need for an individual closes the sale. So when we, take corporate storytelling, or whenever we do drama for the corporate, the purpose is that how to enhance your skills. The storytelling is not about telling any sort of stories, but understanding the character, or understanding your customer, the buyer, as a character of storytelling. The story. Why should he buy that? If somebody has come to buy, say, a bike, and you are pitching to sell him the aeroplane without understanding the need, the sale is not going to be done, it's not going to be closed. So what you have to understand, the need. Okay. And why should he buy that? First thing is, does he need it at all? The second thing comes, why should he buy yours? Because there are n numbers of products available already. So all these things can be done very well through the storytelling. So and storytelling can be your pitch, can be your script for your sale, or your marketing, or when you're as an HR, when you're talking to your employees, you cook a story all the time. You make a story to convince the other person. So that's what we do in corporate storytelling. And we understand, again, we incorporate drama as well. Using voice modulations is very important, maintaining eye contact, hand gestures, all these things. So when I say corporate storytelling, it's about all the departments, so that they empower themselves. Because see, the most important thing we are missing is listening and observing, right? And that's the key to everything. I think when we listen to the others, we get ideas. See, whatever we know already. If we keep on speaking, what will be adding to our personality, or intellect? Nothing. So if we listen, if we observe, we tend to enhance ourselves, our skills. So that's what is, these two things are very important. And observe and listen. And then when you make a story, and then when you speak to other person, that enhances your abilities and skills, because you are empowered, you're enriched. Right. So, ma'am, can you please give us a small example on it? लाइक Like, कि आप स्टोरी टेलिंग लाइक जैसे अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में बताई थी आइसर ट्रैक्टर, तो उसका एक एग्जांपल आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपने स्टोरी वहां पर नरेट करके बताई थी कि अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप सेलिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा, अगर हम सेलिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर किस तरह की हम लोग स्टोरी नरेट करें कि सामने वाला वो चीज बाय करने पे, परचेज करने पर मजबूर हो जाए, लाइक ऑल दैट। सी, इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली आते हैं इस पर, है ना? इनडायरेक्टली आते हैं इन अ सेंस, सपोज घर में, है ना, हम घर में ही हैं, जैसे अगर बच्चों की वापस से बात करें, तो एक मदर को बच्चे को खाना खिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हेल्दी खिलाने के लिए क्या करना पड़ता है ना? मतलब या तो वो कुछ चीजें, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो किसी भी चीज में, जैसे माय चिल्ड्रन से दैट आप तो स्प्राउट्स हमको पीस के उसका डोसा बना दोगे, या वट एवर, इफ यू हैव टू गिव अस समथिंग टू ईट, यू विल मेक श्योर दैट आई डू इट। ओके, और उसके 10 रीजंस भी आ जाते हैं, है ना? कि नहाना क्यों चाहिए, ठीक है, या साफ सफाई क्यों चाहिए, या हेल्दी फूड क्यों चाहिए। So a mother cooks up something so that she convinces the child. Similarly, if a child doesn't have to go to school someday, doesn't want to go, okay, because he may be tired, he may be having plans with his friends, he doesn't want to go at all. So he would say, sometimes बहुत ही common चीज है कि भाई पेट दुख रहा है, या आज सिर बहुत दुख रहा है, या आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो these are all the stories, and the way you present it convinces the other person, right? So coming back to your corporate, अगर किसी को कोई
या एक जनरल ऑफिस स्ट्रक्चर में भी अगर हमें किसी को कुछ बेचना है, तो एग्जाम्पल इज समथिंग दैट व्हेन यू आर टॉकिंग टू द अदर पर्सन, यू आर वहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपको एक कहानी सुनानी है, देन यू आर मेकिंग नो, आई डोंट मीन दैट, आई मीन दैट यू जस्ट ट्राई टू सिट बैक, लिसन टू द अदर पर्सन कि भाई वो उसको चाहिए भी कि नहीं, या अगर नहीं भी चाहिए तो व्हाट इज लुकिंग फॉर, अगर उसको आगे आने वाले कुछ समय में चाहिए तो व्हाट कुड बी द ड्यूरेशन व्हेन ही वुड मेक क्लोज दिस सेल और समथिंग लाइक दैट। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? only by understanding and observing and listening. Once you understand that, now you have the background, now you know the character, whether the other person has the purchasing power. Even if he has a purchasing power, is he the decision maker? Okay, then your characterization starts, then your scripting starts कि कैसे करना है। अगर somebody has come कि भाई फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि मैं एक पेन बेच रही हूँ, ठीक है, अब वो पेन चाहिए तो बच्चे के लिए, लेकिन पैसे कौन देगा? है ना, उसके पेरेंट्स देंगे ऑब्वियसली, है ना, द पेरेंट्स विल पे। सो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? चाइल्ड हैज द नीड, ओके, या इसको हम किसी भी बड़े प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। वो नीड तो है, पेन तो चाहिए, लेकिन उसके लिए ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो मेरा ही पेन क्यों जरूरी है उसके लिए? why the child should buy my pen? तो अगर अब मैंने पूरी एनर्जी तो वहां लगा दी, लेकिन पैसे देने के लिए तो पेरेंट आएगा। क्लोज सेल तो तभी होगी ना when the parent is also sitting. So by understanding this, by talking to the person, you can actually understand कि कब और क्या बोलना है, या किसके साथ में किस तरीके की पिचिंग करनी है। बच्चे को तो लेना ही है, okay, how much he can pay, how much the parent will be ready to fulfill the demand of the child. So all these things are, it's the story building. Okay, so जैसे कि स्टोरी के 3 पार्ट्स होते हैं ना, एक एंट्री लेवल पे यू गिव इंट्रोडक्शन, सेकंड पे उसका एक बॉडी होता है जहां पे वी बिल्ड ऑन एंड वी मूव टुवर्ड्स द क्लोजर, एंड देन कम्स द क्लोजर, राइट। सो उस हर एक की अपनी अपनी लेंथ होती है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप पूरा एस्टैब्लिश करते हो, फिर बिल्डिंग करते हो, तो बॉडी, जैसे इफ यू से बिगिनिंग, बॉडी एंड एंड, so body should be the longest, and then you come to the closure. So all these things, they matter, and they are equally good the part of the storytelling wherever you are applying. Whether you are a one-on-one conversation, or you are talking to your clients, or when you're talking to your employees, or when you're talking to even your peer group, it's equally important to observe, listen, and then build on the story. Great, ma'am. Question third. How will early childhood education help the child in later years? As you know, initially when I was just explaining about why it's important because it builds your foundation, right? All the emotions, all the expression, आपका मूड कैसा होगा, आप कितने डिसिप्लिन होगे, ये सब कुछ अभी आ जाता है अर्ली एज में। सो थ्रू आउट द लाइफ ये आपको काम, आप जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ डेवलप करते हैं स्किल्स, it is throughout your life, it becomes your life, it becomes your personality, which others observe later, है ना। किसका बच्चा है ये, कैसे पता चलेगा? जब इफ समबडी इज डिसिप्लिन्ड, अभी एक चीज होती है, किसका बच्चा है ये, या किसका बच्चा है ये, है ना, दोनों में कितना डिफरेंस है ना, कि भाई इट शोज द अपब्रिंगिंग। तभी हम कहते हैं ना कि रूट्स क्या है हमारी। लेटर ऑन वी फ्लाई, वी ब्लूम, लेकिन उसमें भी एक सक्सेसफुल इंसान है जो जरूरी नहीं है कि ही इज लव्ड बाय एवरीवन, ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन, राइट। सो सक्सेस को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, दैट्स अगेन डिबेटेबल इशू। किसी के लिए सिर्फ कुछ नहीं सक्सेसफुल होना है, किसी के लिए एक इतना हो कि भाई जो मतलब जैसे जो कहते हैं ना कि भाई मैं भी भूखा ना रहूं, साई भी भूखा ना जाए, तो वो ही काफी है। किसी के लिए कुछ मतलब एक ये है कि कुछ भी चीज हो वो कमी पड़ती है, वो सक्सेसफुल है कि भाई सबके अपने अपने मायने हैं सक्सेसफुल होने के। लेकिन जब ये बच्चा जो हमने 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 इस दुनिया में लाया है, और उसको हम प्रॉपर एजुकेशन, केयर, लव, रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उससे करना सिखा रहे हैं,
then it is, it becomes, इसीलिए हम कहते हैं ना कि we empower children to become tomorrow, to become future citizens. तो वो कैसे होता है? इसीलिए तो बनते हैं ना, क्योंकि जो अर्ली एज है ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे आगे आगे का भविष्य है। तो इसलिए, क्योंकि ये आगे का भविष्य है, ये हमारे जो अर्ली इयर्स में उनको जो भी कुछ आप देते हैं, इट बिकम्स देयर पर्सनालिटी। तब उनको इमिटेट नहीं करना पड़ता है, तब उनको एक्ट नहीं करना होता है। डिसिप्लिन होने के लिए उनको कोई ट्रेनिंग एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ती। अच्छा बोलने के लिए वी डोंट हैव टू ट्रेन देम सेपरेटली। सो दिस इज द मैजिक ऑफ अर्ली इयर्स। और हम जितना जल्दी इसको समझ जाए, हम जितना इसको इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दे, वी डोंट हैव टू स्ट्रगल इन द लेटर स्टेज, because we will have disciplined citizens, we will have confident children, who grow up and they work on their own, who love and respect one another. So wo early years ka importance and it's very 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 important. We should have more empowerment in terms of teachers, in terms of content, in terms of infrastructure, in terms of everything. Whatever we can give to our young lot will bring our, will be shown or will be, seen in the years to come in terms of good citizens. That's what we always look for. Question 4. What learning models do we use, or unique innovation or creative things do we use with the kindergarten students? Okay, अभी इसके लिए हमको ना इसको सबसे बड़ी चीज तो इट हैज टू बी ओपन, इट हैज टू बी टेकन केयर एज अ ब्रॉड माइंडेडनेस. A teacher should be trained on not a specific methodology. Yes, we should have a content, we should have target कि भाई नर्सरी के बाद बच्चे को ये आ जाना चाहिए या एलकेजी के बाद बच्चे को ये आ जाना चाहिए, दैट्स फाइन. कंटेंट इज आल्सो फिक्स्ड मोर और लेस, लेकिन मेथडोलॉजी जो है, मतलब उसके लिए हमको रिजिड नहीं होना चाहिए. क्योंकि उस, जैसे मैंने कहा ना कि आपको एक एकेडमिक डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी चाहिए. कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज इन बच्चा कितना अडेप्टिव बन पाएगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना एनहांस हो पाएगा, बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी, राइट, और बच्चे का फोकस कितना होना चाहिए या कैसे बढ़ाना चाहिए. सो इन चीजों पर भी हमें फोकस करना होता है. सो अब सपोज करो आप किसी नर्सरी की क्लास की टीचर हूँ, सपोज मैं एक नर्सरी के क्लास की टीचर हूँ और मैं अगले दिन क्लास में जाती हूँ बहुत अच्छे से तैयार करके लेसन प्लान, लेकिन वहां पे आधे से ज्यादा बच्चे तो रो रहे हैं. तो मेरा वहां का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? शुड आई एज अ टीचर keep on doing my lesson plan, or should I start building rapport with those little bundle of children? So purpose kya hai mera? So the teachers or the methodology should be molded. The target is there, but the first foremost thing is that we have to, develop a readiness. The child should be ready to sit and listen to you. कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चाइल्ड या किसी किसी भी क्लास में आप ले लो, किसी बच्चे का रैपो या किसी बच्चे का अगर रिलेशन टीचर के साथ नहीं बॉन्ड नहीं बन पाता है, तो वो साल खत्म होने का इंतजार करता है बच्चा कि मैं कब अगली क्लास में जाऊं और मुझे इस टीचर से मुक्ति मिले. और टीचर भी वही सोचती है ना कि कब मुझे इस बच्चे से मुक्ति मिले. सो ये नहीं हो, उसके लिए द इनिशियल बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मुझे लगता है कि मोर देन methodology, you have to incorporate innovativeness. Innovation. Actually, innovation is what? Like, you think about something, make it real by implementation. Okay, and use creativity, change. So change or creativity is not innovation. चेंज इज ओनली फ्रॉम वन. सपोज करो कि भाई मैं पेंसिल से लिखती थी और मैंने पेन से लिखना शुरू कर दिया, या मैं पेन बनाती थी और अब मैंने पेंसिल मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. दैट्स चेंज, दैट्स नॉट इनोवेशन. Again, I'm coming back to what we started. If we are observing, then we are innovating. Okay, when you are observing your class as a teacher, when you are observing your friends as a friend, when you are observing your family as a head of the family or member of a family, you will innovate. How will you innovate? Because then you think about where the things are lacking, problem kahan pe hai, kahan pe kisi ko problem face ho raha hai. जहां पे हमको लगता है ना कि इनोवेशन आ सकता है. अगर हम और पुराने कुछ प्रोडक्ट्स देखें जो हमने देखा होगा कि एकदम डेवलप हुए, जैसे कि हम पहले पोस्ट कार्ड में लिखते थे, फिर 7 दिन का इंतजार करते थे, उसके बाद 7 दिन के बाद लेटर पहुंचता था और फिर रिप्लाई आता था. और अभी क्या होता है, इट्स जस्ट वन क्लिक और पहुंच जाता है मैसेज.
है ना, और अर्जेंट से अर्जेंट हो या मजे के लिए हो, जो भी हो, इट्स ऑल कैसे किसी ने सोचा होगा ना कि ये एक प्रॉब्लम है, तो वो कैसे आएगी। मतलब कई बार हम तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम से, जैसे वो होता है, आप सपोज दूसरे एग्जाम्पल लें कि किसी ने तो सोचा होगा ना कि यार इतनी लंबी लाइन लगती है बैंक में, हमें कैश कराने के लिए स्लिप भरो, ये करो, और फिर इतनी लंबी लाइन में खड़े रहो, कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं, किसी को तो भेजना ही पड़ता है। तो किसी ने तो सोचा होगा यार लेट्स टेक आउट द डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड और मेक इट इजी फॉर अदर्स, लेट्स मेक आउटलेट्स जहाँ पे भीड़ नहीं लगे। कितना तो वो लोगों की प्रॉब्लम को सोचना, और सोचेंगे कैसे, जब हम ऑब्जर्व करेंगे। सो फॉर एनीथिंग इफ यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर इन एंड थिंकिंग अबाउट कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, then you can think about a change, make it real, and then comes innovation. The same comes in education also. You have to think about, जैसे हर बच्चे की लर्निंग नीड अलग अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो उसी तरीके से आप किसी एक प्रोसेस पर, एक मेथड पर अगर स्टिक रहते हो, तो मुझे लगता है कि लर्निंग और टीचिंग दोनों ही बड़ा पेनफुल होता है। सो यू हैव टू बी ओपन फॉर लर्निंग एज अ टीचर, so that you can innovate, you can think from the others perspective, कि भाई वो आपको कोई क्यों सुने, आपने क्या इंटरेस्टिंग बनाया है, या क्या ऑब्जर्व किया है, या कितना जानते हो आपके क्लास के बारे में, कि आपको ये अगर पढ़ाना है तो 10 और तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। राइट, सो दोज इनोवेटिव मेथड्स के लिए हमें हमारे टीचर्स को एम्पावर करना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक लेसन प्लान या सब्जेक्ट के लिए। वो तो है ही, लेसन प्लान तो दिया ही हुआ है, वो तो हो ही जाना है, वो तो आप सीधे से भी पढ़ाओगे तो भी पढ़ लेगा। लेकिन उसके पहले का जो रेडीनेस है या प्रिपेयर्डनेस है, how it comes by empowering our teachers. And in early years it's very important, I repeat and emphasize on empowerment of the teachers, understanding कि उनके लिए ये कितना मुश्किल होता है। जैसे अगर हम अब क्लास 3-4 के बाद जाएं, तो बच्चे क्लास में बैठे हैं, इट बिकम सो इजी, उनको मालूम है कि उनको चुपचाप सुनना है, एग्जाम देना है। लेकिन इस एज में आप उनको कैसे सिखा सकते हो? You need a lot of creative ideas, innovation, empowerment of the teachers. So this is how it should be like. मुझे ऐसा लगता है very very important, yes. Ma'am, creative ideas like we are using some teaching aids या और apparatus, so और हम लोग क्या कर सकते हैं, like nursery के kids के लिए हम लोग ने pink pillars हो गए, या कुछ like हाइट्स के लिए हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, होल्डिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, और हम क्या कर सकते हैं? Okay. मैं जो सोचती हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द क्रिएटिव फील्ड, ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जो विजुअलाइजेशन होता है, जो इमेजिनेशन होता है, ओके ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन इज समथिंग जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, ओके मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, एंड यू आर जस्ट डूइंग इट, सो दैट्स इमेजिनेशन। विजुअलाइजेशन इज जो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक इमेज है और आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब आपने देखा हुआ, सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको एक पेड़ बनाना है, तो अब जैसे मैंने पेड़ बोला तो आपके दिमाग में एक आया ना स्ट्रक्चर, की ट्रंक भी है और ग्रीन पत्तियां हैं, फिर ब्रांचेस हैं, फिर फ्रूट्स भी हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स भी बैठी हो सकती हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री। So what I am doing right now is I am visualizing, okay, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्री देखा हुआ है, प्लांट्स देखे हुए हैं ना, कलर पता है, स्ट्रक्चर पता है। इमेजिनेशन में अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुस्कान, यू हैव टू मेक योर ओन ट्री विच डज नॉट एग्जिस्ट, ओके वो पेड़ बनाओ जो अभी तक है ही नहीं, वो आपका वाला पेड़ है जो सिर्फ मुस्कान के पास रहेगा। सो नाउ योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग, है ना, वो एक्टिव होने लगता है। तो आप सोचोगे कि भाई मेरा पेड़ को मैं फिक्स जगह पे नहीं रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आज वो यहाँ है, कल वो वहां रहे, या कल मैं सुबह उठती हूँ तो वो मुझे वहां दिखे, शाम तक आए तो फिर वो यहाँ खड़ा हुआ है। सो दिस इज माई काइंड ऑफ अ ट्री। या फिर ऐसा हो कि भाई मुझे तो ना सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ पे चाहिए, या मुझे ऐसा पेड़ चाहिए जिसमें से ऑक्सीजन ऐसे निकलती हो कि जैसे हवा, है ना, आई कैन फील इट, आई कैन फील द फ्रेशनेस। सो ऐसे कितने सारे आइडियाज आएंगे बच्चों को। तो आप इस तरीके से उनको सोचने का टाइम मिले, मतलब आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हो, आप बहुत सारी चीजें यूज करते हो, लेकिन कई बार दिमाग को खाली छोड़ देने से, यूजलेस चीजें करने से जो मीनिंगफुलनेस निकलती है, जो मीनिंग निकलता है लाइफ के लिए, दैट्स अनमैच्ड।
आप किसी चीज से मैच नहीं कर सकते. तो there is, there is beauty in little things. There is beauty in useless things. Why to always think of a use of an object or use of this activity or use of this or that? यूजलेस चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आप अगर इंस्पायर करें विदाउट यूजिंग एनी एड, विदाउट यूजिंग एनीथिंग, अगर वो स्पेस आप एक हफ्ते में रखते हो विदाउट थिंकिंग कि मेरे कंटेंट का क्या होगा, करिकुलम का क्या होगा, या बच्चा इससे क्या सीखेगा, अगर उसके बारे में ना सोचते हुए आप वो फ्री टाइम रखें कि डू व्हाट यू वांट, think, and at the end of the day come to me and tell me what you thought, what you learned. I think the learning will be tremendous. I think ये experiments हमें करने चाहिए. So ma'am, this is the experiment. जैसे आपने बताया, yes, surely I will try with my kids. Doesn't matter कि क्या age है, but still I will try this. So this is the experiments. Like जैसे हम लोग sheets दिखाते हैं बच्चों को, charts दिखाते हैं, projectors के through हम लोग ने movie वगैरह सब दिखा दी, और हम लोग और क्या कर सकते हैं creative में? लाइक जैसे apparatus की अगर मैं बात करूं, टीचिंग एड्स की हम बात करें, तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉप्स बना लिए. जैसे अगर एक मैं फ्रैक्शन चैप्टर ही आपको बताती हूँ, मैथ्स का चैप्टर है, विद द हेल्प ऑफ क्लॉक मैंने बच्चों को पूरा फ्रैक्शन समझाया था. तो और हम क्या कर सकते हैं एज ए टीचर, हम और क्या कर सकते हैं? सी मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट की कोई कमी नहीं है. ओके, एंड ऑल टीचर्स एवरीवेयर दे आर सो मच एम्पावर्ड, उनके पास अच्छा खासा टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो दे आर डूइंग मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ इट. और भी इनोवेशन, थिंक अबाउट व्हाट इनोवेशन कैन ब्रिंग अबाउट. मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि द स्टोरीज एंड जैसे कंटेंट तो है ही, एकेडमिक डेवलपमेंट तो जरूरी है ही, बट वो जो एक ओवरऑल स्किल और कहना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना. कई बार ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन के थ्रू जानते हैं ना, कि ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, उनका रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर लेसन, पर्टिकुलर चैप्टर, है ना. तो अगर वो रिस्पॉन्स सही और उस पर्टिकुलर टाइम में देते हैं तो दे आर नॉर्मल लर्नर, है ना. धीरे 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 अगर वो रिस्पॉन्स डिले होता है तो क्या होता है कि द चाइल्ड वी फील दैट स्लो लर्नर है या लर्निंग पेस स्लो है. यही हमारा ऑब्जर्वेशन होता है. बट इफ वी थिंक अबाउट फ्रॉम द आउटसाइड, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचे कि वो बच्चा जवाब क्यों नहीं दे रहा है, उसको समझ में आ गया है. मतलब अगर हम आईक्यू की बात करें तो आईक्यू क्या है? इट्स इंफॉर्मेशन, वी रिसीव इंफॉर्मेशन, वी कन्वर्ट इट इनटू नॉलेज एंड गेट स्टोर्ड, राइट. दैट इज आईक्यू. सो अगर वो सही है, सब कुछ चल रहा है ठीक, लेकिन अब उसके बाद की जो स्टेप है, मतलब उसका रिस्पॉन्स, मतलब नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना और विजडम को एप्लीकेशन में, मतलब उसको अप्लाई करना, वहां पे आके प्रॉब्लम आती है ना. वहीं से हमारे परफॉर्मर्स डिफर करते हैं. कोई अच्छा परफॉर्म करता है, कोई बढ़िया परफॉर्म करना है. इन्फॉर्मेशन तो सबको एक जैसी दी जा रही है. तो अगर हम ये सोचे कि भाई इस बच्चे को समझ में तो सब आ गया है, but he's not able to decide whether to speak now or later, whether he should speak it or not at all, right? So that's what. So अभी बोलूं कि बाद में बोलूं, बोलूं भी कि नहीं बोलूं, ये बोलूं कि ये ना बोलूं. तो इस स्ट्रगल में क्या होता है, वो टाइम निकल जाता है जिसमें कि आप वो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट. सो क्या ये नहीं हो सकता कि उस बच्चे की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे हम काम करें, सो ही विल बी एबल टू डिसाइड कि मुझे ये बोलना है, ऐसे बोलना है. तो वो जो टूल्स है, मुझे लगता है वी हैव एनफ ऑफ देम. वी हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द नीड ऑफ एवरी चाइल्ड, and there that's where the theory of multiple intelligence comes into picture. And जिसमें कि हर बच्चे की यूनिक रिक्वायरमेंट है, हर बच्चे की, आई थिंक ऑल द टीचर्स मस्ट बी एम्पावर्ड ऑन दिस यूनिक नीड. वैसे वैसे ही बहुत कुछ है इसमें. जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दैट आल्सो सेज कि ऑल द टीचर्स शुड बी ऑन द कॉमन पेज एंड सेम लेवल, एंड उनका एम्पावरमेंट जरूरी है. इसीलिए हम बहुत कुछ चेंजेस हैं अभी, तो बहुत सारी चीजें और हमें सीखनी है एनईपी को लेके. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू ब्रिंग अबाउट मेजर चेंजेस इन ऑल द इयर्स, ऑल द structures and the levels of education. थैंक यू सो मच नीलिमा मैम, आपने इतनी सारी चीजें बताई है. अब मैं बहुत वही सोच रही हूँ कि क्या क्या इम्प्लीमेंट करूँ मैं बच्चों पर. बट डेफिनेटली आपने जो भी गाइड किया है, डेफिनेटली आई विल ट्राई इट. एंड आपसे काफी सारी चीजें सीखनी भी है. स्पीच टेक्निक्स, थिएटर टेक्निक्स, किस तरह से हमको स्टोरी टेलिंग बच्चों को करनी चाहिए. बिकॉज येस हम लोगों ने की है, बट स्टिल आप
ऐसे गाइड करेंगे तो डेफिनेटली हम और अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पाएंगे। एंड द अदर थिंग इज कि जो आपने जिस तरह से बताया एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग, लाइक एज आई एम टेकिंग एक्टिविटी बेस्ड, मतलब मैं हर चीज बच्चों को एक्टिविटी से करवाती हूँ, बट येस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स येस आई विल टेक द एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग टू। So thank you so much for your guidance and thank you so much for coming on Educreate's platform. Thank you so much, Muskan, for having me here. I hope I could do some justice to, the learning, and maybe, it may be useful somewhere if you feel. मुझे I'm sure बहुत सारा तो नहीं मैं बता पाई होंगी, लेकिन हाँ, अगर हम इतने सारे टॉपिक्स को थोड़ा बहुत भी टच कर पाए हैं, so I feel good. Thank you so much for having me here. Thank you so much, ma'am.